request to all stakeholders, kindly cooperate with the Kashmiri Pandits, because no one can snatch our motherland. We once again request the Government of India, the state governments and all stakeholders, kindly provide us the land within the 6 districts of Kashmir, so that in clusters the Kashmiri Pandits could be resettled back in the form of the colonies or the apartments. Thank you very much. Telling them past 2 years rigorously, please show us the piece of land where you are going to rehabilitate Kashmiri Pandits. But they have not shown it. They are not. They are showing just it's a kind of the election manifesto as a jumla. And we want to live with Muslim brothers, daughters, sisters in the mohalla, village, everything. Not separate colony. Not in a separate colony. Yes. In no case. एक चीज है बड़ा क्लियर हम करना चाहते हैं, जो पिछले 70 साल से हम समझते हैं फौजी संगीनों की छत्र छाया में कश्मीरी कौम की परवरिश हुई है, और वाक़ात ने साबित कर दिया है कि फौजी ताकत ने जर्मनी को दो फाड़ कर दिया। अवामी इनकलाब ने और जर्मन पार जर्मन एक जर्मन किया और दुनिया देखती रही। हम इसको डिस्प्यूटेड कलेक्टर समझते हैं, ये इस पर हम कोई दो राय नहीं है। हम डिस्प्यूटेड कलेक्टर और पीस रेस्टोर करने के लिए बातचीत होनी चाहिए विद ऑल स्टेक होल्डर्स एंड बिटवीन द इंटर कम्युनिटी डायलॉग भी एंड हुर्रियत कॉन्फ्रेंस और स्टेक होल्डर है उनके साथ भी बात होनी चाहिए, और पीस रेस्टोर करने सब कॉन्टेंट में फॉर द प्रॉस्पेरिटी डेवलपमेंट एंड हम अपनी ग्लोरी वापस लाना चाहते हैं जो हमने 5000 साल प्रिजर्व किया। वी हैव फॉट फ्रॉम 1986, फिर 1546 से हमने मुगलों के साथ भी फाइट किया। Time and again, it is the responsibility of the state government to ensure that the original Aborigines inhabitants has to return back to the Kashmir. Till date, no efforts has been done by the state government and the central government so far. Since last 30 years. Since last 30 years. Beyond this, there has been a biased approach in totality, right from the employment to the facilitation to healthcare, everything. The people in exile, even the people are in the prison, they are taking care of the everything. But Kashmiri Pandits has been ignored in totality. Now, looking to the plight that we have, as I said you, that we have met with all local leaders, all political leaders, they have assured, so has the Hurriyat conference. They have said that assured that they will urge, they will take up the forward, they will look forward to take up the respective authorities that the Kashmiri Pandits should come back. But end of the day, it is a responsibility of the state government to ensure that the people has to come back. So do you think they are not doing what needs to be done? Yes, they are not. Yes, they are not. We are addressing these issues, which the local administration has to look at. There is a lot of bias system. If the poor is there, he is dragged, pushed to the wall. Human rights violation. We have to address collectively all these issues. We have no problem in that. We love to. Yeah, please. Was it a warning to the state and central government? Yes, yes, we had been suppressed. Our voice has been suppressed for 30 years. We are taken for the right. We will not leave it like that now. हम उनको भी कंडेम करते हैं जो हॉस्टाइल एलिमेंट्स है कश्मीरी जो टीवी चैनलों पर आ जाते हैं और कश्मीरी मुसलमान को बदनाम और बदकार करते हैं, ये एंटी नेशनल है, हम उसके खिलाफ भी है। कश्मीरी पंडित हमेशा गांधीगिरी में विश्वास रखा है उसने और हमेशा रखता रहेगा। हम यहाँ सिर्फ इसलिए आपके सामने मुखातिब है कि लोकल मास का हमें सपोर्ट चाहिए ताकि वो हमें एनकरेज करे, हमारी रिहैबिलिटेशन में हमारी मदद करे। वो हमारे बिहाफ पे लोकल एडमिनिस्ट्रेशन से यहाँ फाइट करे, जिद करे कि भाई हमें कश्मीरी पंडित भाई वापस चाहिए। वो हमारे इस मोमेंट में साथ दे। वी आर एक्सपेक्टिंग देम to be with us and fight in one together. अच्छा प्रोग्राम को आज गलत मानते हैं जिसके साथ नहीं मैं उसके साथ हूँ। मैंने सफरे आज़ादी की 1200 गाँवों में नौनेर चला, कश्मीर की फ्रीडम के मूवमेंट के साथ मैं हूँ। दैट इज इन माई ब्लड एंड स्किन। कश्मीर इज डिस्प्यूटेड। हम कोई कॉलोनियल सिस्टम में नहीं रहेंगे, ऐसी बात नहीं है। मैंने 70 साल 8 साल जेलें काटी है। आई वॉज द फर्स्ट मैन जिन्होंने 1968 50 साल पहले सुप्रीम कोर्ट में मैंने केस किया। I was detained under Prevention Act law passed by the Indian Parliament. I challenged it. मैंने एक्सेशन किया 3 बातों पर। मेरी लेजिस्लेचर है, मेरा प्राइम मिनिस्टर, मेरा कॉन्स्टिट्यूशन, मेरा झंडा है। मैं इसको नहीं मानता हूँ। I challenged 5 judges gave a judgment. I took it to 13 judges full bench.
संपत वर्सेस स्टेट, गूगल खोल लीजिए. आई थॉट इट लास्ट ईयर मैंने हड़ताल दे दी. ट्रेडर्स, चैम्बर एंड कॉमर्स, एम्प्लॉयज, 5 लाख एम्प्लॉयज, 2 लाख पेंशनर एंड देयर फैमिलीज, दादा और पोता, दादी और पोती, वक्त रहत सुमावती प्रभावती इथे पर कंसस को दान मुलन वक्त तो सुमावती तो तुले लोगों तो लाचु सुमावल चक बनाओ. दैट इज वी आर वन. कश्मीरी पंडित, कश्मीरी मुसलमान एक कौम है, एक नस्ल है, एक जबान है, एक कल्चर है, एक तहजीब है. 5000 साल की दुनिया में सबसे ओल्डेस्ट एंड रिच सिविलाइजेशन हमारी है. हम कोई कॉलोनी में नहीं रहना चाहते हैं. विद इन आवर ब्रदर्स, इन आवर मोहल्ला, इन आवर विलेज, इन आवर लैंड्स एंड बायलैंड्स, वी हैव टू शेयर द फीलिंग्स. जो यहाँ से है, हमने एक चीज तस्वीर लिया है कि 1990 के वाक़ात को हमने एक्सीडेंट ऑफ हिस्ट्री इसको लेते हैं, तारीख का हादसा, और मुसलमान और पंडित दोनों ने इसको बुलाना है. इसमें हमने हम जब ये कहेंगे हमको निकालेगा, वी हैव नॉट बीन ड्राइवन आउट, है ना. इट वाज अ कॉन्स्पिरेसी बाय द स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म है. हम इसको भी फाइट करते हैं. आई हैव स्पेंट 8-9 इयर्स इन जेल्स इन दिस मूवमेंट. मैं हर जगह आया हूँ. तो मैं 60 साल से जम्मू कश्मीर का एक फेस हूँ, वर्किंग क्लास का, सर्विस क्लास का, ह्यूमन राइट्स का, सिविल सोसाइटी का. तो इस सिलसिले Kashmiri Pandits. So far, we all are aware about the Kashmiri Pandits is one of the oldest race in the world. The history is there about 4,000-5,000 years. We are original Aborigines. We are original inhabitants of Kashmir. हम यहाँ के रहने वाले हैं, and हमारी जो history है, that's about 5,000 years old history. The Kashmiri Pandits have always sacrificed for the motherland, and it has also contributed into the integration and sovereignty of the nation. Time and again, the people have fought for this land, to save this land. Unfortunately, in 1990, there has been the domicide. The Kashmiri Pandits became the victim of the domicide, state-sponsored terrorism, due to which the Kashmiri Pandits has to move out of this place and to settle across the different regions of the country. The most of the KPs who have got killed in Kashmir, it was 100 times more they got killed outside due to the extreme and harsh temperatures, due to the vulnerable diseases. The state government and central government failed to address the issues of the Kashmiri Pandits, the old age people. Nobody came for the rescue of the Kashmiri Pandits during the exile period. Unfortunately, most of the political parties, the local and the national parties, also failed to address the issues of the Kashmiri Pandits. They exploited for their election manifestos. The time and when they used to come for the elections, they used to come up with the freebies and the candies to lure the Kashmiri Pandits for their election manifestos. Even they failed to address the issues of the Kashmiri Pandits. It's also very unfortunate the international organizations like UNO, UNHCR, even the National Human Rights Commissions has been blind and deaf on the plight of the Kashmiri Pandits and the genocide of Kashmiri Pandits. I just want to remind to all the stakeholders, the Government of India and other national international organizations, Kashmir is not just a piece of land. For Kashmiri Pandits, it's the Chetna, it's the soul. And we will die for our motherland at any cost. The state government, the central government, so far past 30 years has not been in a position to address the issues of Kashmiri Pandits towards the return and rehabilitations process. They are not allowing us to come back to the home. We are not understanding what is the conspiracy behind. We had been pleading them to return us back to the Kashmiri Valley because it's our motherland, it's our soul. We cannot be away from our soul. Our voice has been suppressed time and again by the state agencies and the central government agencies. But enough is enough. We will not get suppressed now. We are aware about it that we have to come back to our motherland at any cost. We also want to share very clearly, I as a Satish Mahaldar, I am born from the same village where from the Burhan Wani has taken up the birth. I warn to the central government as well as to the state government,
kindly make it sure and urge towards the return and rehabilitation of the Kashmiri Pandits ASAP. We have met most of the political parties and the leaders to seek the consensus about the return of the Kashmiri Pandits. They have assured us for complete support and assured us that whatever their possible is there, they will give us the support in terms of the return and rehabilitation.